जूनोसिस है, जैसे कि रिकेट्सियल को छोड़ो इसके अलावा कौन सी है? देखिए और रिकेट्सियल जूनोसिस यानी कि एक अलग ग्रुप हो गया। वो जूनोसिस या वो डिजीज तो प्राइमरली इनवर्टिब्रेट एनिमल्स में है और रिकेट्सियल ग्रुप ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म हो रही है। अब प्रश्न आता है व्हाट इज रिकेट्सी? हाँ बोलो। Smallest bacteria. We can say that they can be linked between virus and bacteria. So virus is limited organism. तो DNA है या फिर RNA से बैक्टीरिया में दोनों आ गए, ठीक है? बैक्टीरिया से स्प्रेड हो गई, वायरस की कोई स्प्रेड नहीं है, तो रिकेट्सी भी इनसे डीप से हो गई, यानी कि लिमिटेड बैक्टीरिया हम कह सकते हैं। लिमिटेड बैक्टीरिया जिसमें कुछ सीधे बैक्टीरिया के डेवलप होते हैं लेकिन कुछ अभी नहीं हुए, कुछ वायरल कैटेगरी के। तो zoonosis means zoo means animal, noso means disease. So disease and infections which are naturally transmitted between vertebrate animal and human are the diseases which are called as zoonosis. It can be anthropozoonosis, zooanthropozoonosis and amphizonosis. अब ये तीन तरह की zoonosis हो गई। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कुछ प्राइमरी डिजीज zoonosis की हो सकती है और एनिमल उनके पैरेलल कल्चरल होस्ट हो सकते हैं। कुछ डिजीज प्राइमरी एनिमल्स के और मैन बैक्टीरिया के एक्सीडेंटल हो, और कुछ दोनों से इक्वली इम्पोर्टेंट है और दोनों में इक्वली ट्रांसमिट होती है, ठीक है? Zooanthropozoonosis, anthropozoonosis and amphizonosis. Now there are again depending on their epidemiological and clinical features, again categorization: direct zoonosis, cyclozoonosis, metazoonosis and sporozoonosis. Direct zoonosis means in the vertebrate host में man-made या man से vertebrate host में direct infection हुआ है, direct transmission हुआ है, कोई मीडिएटर कोई मिडल एजेंट या वेक्टर नहीं इन्वॉल्व हो रहा है। सेकंड इज साइक्लोजूनोसिस, इंफेक्शन या ट्रांसमिशन में डायरेक्ट हो रहा है लेकिन कुछ साइक्लिकल चेंजेस भी हो रहे हैं, जैसे कि थर्ड इज मेटाजूनोसिस। प्लेग कैसे चलता है, कैसे ट्रांसमिट हो रहा है? invertebrate vector आ गया, non-vertebrate एक vector आ गया बीच में, so that is metazoonosis and cyclozoonosis. कोई living organism बीच में नहीं आ रहा है। Cyclo means when soil, जैसे कि माइकोसिस, फंगल इन्फेक्शन, एक होस्ट में दूसरे को डाले तो बीच में कोई जो कल्चर मीडिया आ रहा है या उनका रिजर्वायर आ रहा है, that is not a living organism, that is biobacteria. soil हो सकता है, पत्तियां हो सकती हैं। So four categories of zoonosis are there: direct, cyclozoonosis, metazoonosis and cyclozoonosis. This is about zoonosis. What is zoonosis? Now rickettsial disease. तो रिकेट्सी क्या है? These are prokaryotes, small bacteria. They resemble characteristics of both bacteria and viruses, and they are smaller than bacteria and larger than viruses. So they are in between, somewhere between viruses and bacteria. So what are the characteristics like bacteria, and what are the characteristics like virus? So characteristics like bacteria, they contain both DNA and RNA. virus में या तो DNA होगा या RNA होगा. They multiply through binary cells, and there is some
चेन रिएक्शन, दे आर ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म। अब हम स्टेन करते हैं, सिंगल स्टेन, ग्राम स्टेन, तो कहते हैं ग्राम नेगेटिव स्टेन, जबकि वायरस में कोई स्टेनिंग नहीं होती। तो characteristics like viruses, they are obligate intracellular parasites. Obligate, अपन माइक्रोऑर्गेनिज्म को कभी चुके हो गया। obligate का एक और opposite word है facultative. So you know what is obligate and what is facultative. So these organisms are obligate intracellular parasites. They can't be cultured in artificial media. Means without using media they can't be cultured. They need a live media to be cultured, and they require living cells or embryonic eggs for frozen isolation. So these are collective characteristics of the rickets. They replicate within the cytoplasm of endothelial cells because they are obligate intracellular parasites and can cause damage of endothelial cells and smooth muscle cells and ultimately cause necrotizing vasculitis. Infections, signs and symptoms, they are mostly present as febrile infections. Febrile infections, fever, and in most of the cases, fever is less. And extra, a flat ulcerated lesion may be developed at the site of inoculation. Okay, इसकी में definition है, तो हम अभी बात करेंगे rickettsial zoonpses, they are vector borne. Means क्या हो गया? vector borne का क्या मतलब है? They require the output vector or transmission. अब rickettsial zoonpses की बात कर रहे हैं, means एक एंड पे तो ऑर्गेनिक एनिमल है, एक एंड पे ह्यूमन बीइंग है और दूसरे जो ट्रांसमिशन लीड है from the other output. So an XR क्या हुआ कि जो ट्रांसमिशन पॉइंट है वो ह्यूमन बीइंग, तो आपको ट्रांसमिट कर रहा है, तो वो इनोकुलेशन पॉइंट मेक एन XR. जैसे माइट को हो रही है, सी को हो रही है, सी में जितने के खाता है या माइट में जितने के खाता है और इनोकुलेशन हुआ है रिकेट्सिया का, दैट पॉइंट इज XR. most of the diseases में XR present होता है, जिस साइड ऑफ वायरस ऑक्टोपस. So they are pleomorphic, means they can be foci at one time or bacilli at another time. So they can be classified as pleomorphic or photobacilli, gram-negative, non-motile, non-capsulated, gram-negative, unable to grow in cell-free media. They need a live culture media to grow. Growth generally occurs in the cytoplasm of infected cells. Now, depending on their epidemiological features and clinical features, they are collectively divided into three groups of diseases. One is typhus group, second is spotted fever group, and third is other. In typhus group, there are three important rickettsial diseases. One is epidemic typhus, urine typhus, scrub typhus. Out of these three, two are important because they are present in our country. India में इन तीन में से दो presented, one is urine typhus और इधर से endemic typhus, and one important is scrub typhus. आपने अगर सुना होगा तो पिछले कुछ सालों में scrub typhus की काफी केसेस हमारे बढ़ रहे हैं. Rickettsial agent causing epidemic typhus is Rickettsial zoonpses. Insect vector which is involved to transmit the disease is loud, and mammalian reservoir is human. For endemic typhus, positive agent is Rickettsial typhi, insect vector flea, and mammalian reservoir is rodent. Scrub typhus are typically transmitted by mice, and again mammalian reservoir are rodent. So for typhus group, the important diseases are epidemic typhus, endemic typhus, and scrub typhus. For second group, spotted
Rocky Mountain spotted fever. Agent is Rickettsial Zoonpses. Again, the impact factor is 6 and mammalian reservoir is Golden and Brown. What is Rickettsial cough? Outside on Rickettsial. Impact factor is mice and mammalian reservoir is mice. Third group is others. Contain two important diseases, one is flu fever and second is French fever. Again, flu fever is prevalent in India. caused by Coxella vulnerability. Impact factor. अब आपने इतनी सारी डिजीज में देखा एक ही सारी डिजीज जिसमें कोई डिजीज इम्पैक्ट फैक्टर नहीं and mammalian reservoir is category C cough. French fever caused by Rickettsial Zoonpses. Factor is gout and reservoir is flu. तो तीन में तीन है और दो आठ डिजीज है जिसमें हमने positive agent factor and reservoir. इनके अपने साइन सिम्टम्स हैं. मोटी मोटी बात यह है कि जो बैक्टीरियल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वायरल डिजीज की जो साइन सिम्टम्स होती हैं along with rat. तो rat में fever with rashes. इनमें important and particular specific points related to the थोड़ा बहुत हमने अंतर है एपिडेमिक टाइप का साइन सिम्टम्स आप देखेंगे फीवर माइल्ड फीवर जो भी वायरल डिजीज के कोई भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन के साइन सिम्टम्स हो सकते हैं. फीवर माइल्ड या कुछ डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है? एपिडेमिक टाइपस में रैशेस हो रहे हैं बट नो ऐसा मींस कोई इनॉकुलेशन साइट है और पर जो रैशेस हैं दे आर ऑल ओवर बॉडी एक्सेप्ट पाम सोलन. तो एक पर्टिकुलर सीवियर फीवर आ रही है epidemic typhus, then endemic typhus, again fever, myalgia, headache, rashes, nose cough, pain. Rashes are more intense than extremities and this is milder form of pain. हम अगर इसका typhus या epidemic typhus से compare करें तो endemic typhus is milder form. Then इसका typhus again same sign symptoms fever, headache, rashes, etc. तो दोनों में endemic and epidemic में extra fever and again one important specific fever lymphadenopathy. So fever with rashes is established lymphadenopathy is severe or specific fever with subtype. Then Indian typhus rashes with a start first appear on wrist and ankle. The key तो epidemic typhus और endemic typhus में जो rashes हो रहे थे वो palm और wrist पर नहीं हो रहे. Then flu fever में अपने आप में एलर्जी करता है. Positive attending, let नाम नहीं आ रहा Coxella vulnerability and again there is pneumonia. There is fever, no rashes. So flu fever, definitely flu fever होगी एक तो उसका volatilization का नाम अलग है. दूसरा because इससे पहले बताया bacterial involvement है. तो transmitting bacterial के बीच में और no rashes. And it can be present with the signs and symptoms of pneumonia. Then again, Rocky Mountain spotted fever and Rickettsial cough. So among these major group of Rickettsial diseases, the commonly reported diseases in India are four: typhus, murine or endemic typhus, Indian tick typhus, and flu. Now talking about typhus. तो अब कुछ पता हो गया आपको इसके बारे में डेटा के
from Russia in the north and northern Australia to Pakistan. So India is in between and India is in the middle of this disease. It is the emerging infectious diseases in India. आपने जो आप पिछली बार से समझा कि emerging and re-emerging. Emerging कौन सी होगी? What does it mean by emerging diseases and what is re-emerging disease? Emerging is और कोई चीज बहुत सारी चीज इसमें कंट्रोल होगा नहीं आप एक्टिव करेंगे और फिर से वो किया जाए तीन बात तो पॉजिटिव इज रिकेट्सियल ज़ूनोप्सिस इट इज एन ऑब्लिगेट इंटरेस्ट जितने भी टीचर से रिकेट्सिया आपको बताएं ऑब्लिगेट इंटरेस्ट में बताया साइड है वन नेगेटिव है तो बैक्टीरिया के फॉर्म सीओ मॉर्फिन मार्कोलॉजी है इंक्यूबेशन पीरियड इज 10 to 12 days on an average, or it is 5 to 20 days. Environmental factors. अब सभी factors involved है. तो environmental factors वो सब होंगे. जैसे कि मलेरिया में देखने को होते हैं ज़्यादा केसेस मलेरिया के. वो जो factor है वो सही करता है. इसमें माइट इन्वॉल्व अगेन एनवायरमेंटल फैक्टर क्या होंगे पोस्ट मानसून so most of the cases अगर after July and before February during monsoon and during post monsoon period and related with the increased crop vegetation क्योंकि माइट का और छोटी घास फूस जो dense घास वाले एरिया होते हैं उनमें पनपते हैं उनमें वो ब्रीड करते हैं so reservoirs is stomach like mites which feed on small mammals. Mode of transmission, bite of infected larval mites which is known as sugar. Transmission cycle naturally it is from mites, rats and mice to mice to rats and mice. And man is accidental host. The infected larva of mites bites to the human. It transmitted to the human being. And human to human transmission is not a problem. Cycle is like mice to rat and mice to mice and human are accidental. So mice have 4 stages. One is egg, larva, nymph and adult. And the factor which is responsible for transmission is mice, larval form. And the transmission in mite is transmitted transmission is also recorded. What does it mean by transmitted transmission? Transmitted transmission क्या होता है? और भी बहुत चीजें होती हैं. आपकी क्या? आपको इसकी जो भी चीजें क्या होता है ट्रांसमिटेड ट्रांसमिशन? क्या होता है? ट्रांसमिटेड ट्रांसमिशन क्या होता है? जब कोई इंफेक्शन मदर से प्रोजेनी में ट्रांसमिट हो दैट इज ट्रांसमिटेड ट्रांसमिशन. एक बार माइट इंफेक्ट हो गया तो इसकी जो प्रोजेनी जो एग जो अगेन लार्वा बनेंगे दे आर आल्सो कंटामिनेटेड दे आर आल्सो इंफेक्टेड. तो एक बार अगर माइट में इंफेक्शन हो जाता है इनोकुलेट देन इट इज infective for human being or other rats and mice forever and even their progeny is also infected. So this is what the transmigrant transmission. This is the life cycle of mice at that larva, lunar sugars, the nymph and adult. And only this form, larval form, is infected to human being because only this form feeds on the
human beings. So transferable transmission is there, and also transradial transmission means this infection when larva goes to the lymph and adult form, infection also carries to the adult form. Clinical feature disease present with the features of जो सारे Rickettsial disease के common feature हैं fever, hydrate fever, weakness and rashes and lymphadenopathy. इसका टाइप होता है एक पर्टिकुलर सिंगुलर अलग फीचर होता है that is lymphadenopathy. A scar is a punched out ulcer covered with blackened scabs which indicates the location of the mite bite. जहाँ लार्वा ने काटा है, जहाँ से inoculation हुआ है infective agent का, that site is known as eschar. But eschar is vigilant or visible only in 50% of the cases. Rest of the 50% cases it will get unnoticed. पता ही नहीं चलता है वो काटा है. This is what the eschar looks like. Clinical signs, incubation period मैंने आपको बताया 10 to 12 days और varies from 5 to 20 days. Fever bite is painless और the site of eschar is painless. तो पता ही नहीं लगता कि कहीं कुछ हुआ था. Bites are often found on the groin, axilla, genitalia or neck. Positive agents multiply in the inside of phagocytes because this is obligate intracellular parasite. Illness begins rather suddenly with fever, severe headache, and infection of mucous membrane in the form of conjunctivitis and swelling of the lymph node. Lymphadenitis is there. Spotted rash present on the trunk. Complications can occur in the form of pneumonia, adult respiratory syndrome like diseases presentation, myocarditis, and DIC. Diagnosis done by indirect immunofluorescence antibody. By rapid diagnostic kits are also available in the periphery and ELISA. Treatment by one dose tetracycline, doxycycline, chloramphenicol. Prophylactic treatment single dose of chloramphenicol. तो जो लोग इसका टाइफस फैल रहा है जिन एंडेमिक रीजन्स में और पोस्ट मॉनसून जो किसान हैं या जो फील्ड में काम कर रहे हैं उनको जाना ही है, we can give them a prophylactic dose of chloramphenicol to prevent subtyphus. Vaccine. Vaccines are not useful because it exhibits antigenic variation. Systemic variations के लिए वैक्सीन बनाएंगे तो that is not required. So the agent or the positive agent exhibit antigenic variation and immunity to one strain does not confer immunity to another. So vaccine is ineffective. So what is the control measure for individual protective clothing? क्योंकि we have to save them with the bite of mite. Mite की bite से बचाना है. Protective clothing फील्ड में काम करने जा रहे हैं तो रेपेलेंट से सकते हैं जैसे हम एंटी मलेरियल में पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर्स देते हैं in the form of benzyl benzoate and diethyltoluamide etc. Do not sit or lie on the bare ground or grass and clearing of vegetation after post monsoon season. Control strategy, case identification, early diagnosis and prompt treatment, public education and rodent control and clearing of weeds. So this is something about drug typhus. Now second is murine typhus, also known as endemic typhus. तो उसका जो वेक्टर है that is mite और इसका जो वेक्टर है that is flea. So we can say it as flea-borne typhus. Positive agent Rickettsial typhi, vector mostly rat flea, floppy. There are natural infection in rats. So rats
जो infection है that is go unnoticed because there is no sign symptoms on that who are infected, and these are also unaffected after infection. तो flea से भी असर नहीं हो रहा, rat से भी असर नहीं हो रहा, but when the infected flea bites to the human being, it inoculates positive agents inside the human being, and human being can show sign and symptoms. तो sign and symptoms क्या होंगे? जो गलत से बता रहे थे, अगर नहीं पढ़ते रहे हो, एग्जाम में बैठे हो तो कुछ तो लिखोगे ना, क्या लिखोगे? फीवर, रैश, और साथ नहीं होता, नॉइज का, the sources of infection are inhalation of dry infected flea feces, inoculation of infected feces into the skin, and scratching of flea while feeding or scratching after bite. Incubation period 1 to 2 weeks usually varies, or on an average 12 days. Present with the low grade fever, myalgia, headache, no eschar, rashes are more on trunk than extremities. It is milder form of illness than epidermic typhus or histophysis. Treatment with drug of choice is tetracycline. With control of fleas and rodent control. Third is immune tick typhus. Positive agents, Rickettsial Zoonpses, transmitted by the brown dog tick. Disease occurs predominantly in Mediterranean areas such as India and Africa. Onset of symptoms sudden, and the incubation period varies from 3 to 7 days. Again, the signs symptoms same: fever, weakness, rashes, no eschar. Flu fever. 3 चीजें इम्पोर्टेंट मैंने अलग बताई थी इसमें, बाकी रिकेट्सियल ज़ूनोप्सिस से वन है पॉजिटिव एजेंट में बैक्टीरिया है और दूसरा गर्मिटिव, और डॉक्टर को इन्वॉल्व नहीं है और रैशेस नहीं हो रहे हैं. तो कैन बी प्रेजेंटेड प्राइमरी विद द साइन सिम्टम्स ऑफ निमोनिया. तो शायद कॉक्सियला प्रेजेंट इन टिक फीसेस सर्वाइव इन ड्राई फीसेस फॉर लॉन्ग पीरियड. So the transmission is through infected soil, inhalation, shed in the milk of infected animals, particularly abundant in products of consumption, contaminate environment and participation. No arthropod vector involved in transmission to the human being. So human infection can be as a cause of ऑक्यूपेशनल हैजार्ड. तो जो इंफेक्टेड एनिमल्स के बीच में रहकर काम करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री या जो काउ पाली हुई है या जो इंफेक्टेड एनिमल्स के बीच में काम कर रहे हैं, दे कैन बी infected as an occupational hazard. Veterinary surgeons can be infected much than other persons handling wool or hide, meat animal products contaminated with Coxiella vaginae, and drinking infected milk. Route of entry can be through skin mucosa, through inhalation, or through ingestion. Person to person transmission is rare. Disease can be presented as acute systemic infection, interstitial pneumonia, or can be as chronic infections in the form of hepatitis, meningitis, endocarditis, or there is spontaneous recovery is there. Means complication and that is very rare. Again, it is an obligate intracellular microorganism, primarily affects monocytes and macrophage cells. Remain dormant after recovery in the tissue of the patient for 2 to 3 years in the form of latent infection. In dried pieces of wool, it survives for the year and it cannot be destroyed with the parchmentation by the holder method, but flash method is effective. So I hope कि माइक्रो में आपने जो ये holder method और ये torch method पढ़े हैं,
क्या बोलते हैं किस चीज से मैटर है, किस चीज से मैटर है, सेपरेशन, माइक्रोक्रिस्टलाइजेशन, डिसइंफेक्शन। Diagnosis can be done by culture or serology or isolation of the microorganisms from blood, sputum and other clinical specimens. Vaccine is available. It is live attenuated vaccine. Treatment with tetracycline and doxycycline. If endocarditis is there, then the treatment is with combination therapy of tetracycline and cotrimoxazole or tetracycline and rifampicin. So these 4 diseases are important. But the classification, positive agent and that are involved with these diseases you have to need to know. रोल नंबर बता दें। अटेंडेंस तो हो ही गई है, मैंने हर निकाला, मतलब बांटने नहीं चाहती तो फ्रेंडली चीज बताओ मुझे कि बाकी नहीं आए तो एक क्वेश्चन ऐसा हो गया कि अब पूछना ही नहीं बनता हमारा। तुम लोग क्यों आते हो पढ़ने? रियली आई वांट टू, मतलब टू बी श्योर कि वाकई क्यों आते हो आप लोग, सिर्फ अटेंडेंस के लिए? अच्छा डॉक्टर बनना है ऐसे हाफ-हार्टेडली, जो अभी मैंने 1 मिनट पहले बताया वो कहीं याद ही नहीं है, तो ध्यान से पढ़ने नहीं आए। नहीं मतलब मैं अटेंडेंस नहीं हटाने जा रही, प्लीज फ्रेंडली मुझे एक सच्चाई तो बताओ। ये सच्चाई निकली है, सभी का यही हाल है। दोबारा बताओ इनकी बातों को, तुम दोबारा इन्हें बताओ। सब एग्री है इस आंसर से? तो एक बार बताओ, ये जो तुम्हारा हो गया, मैं मानती हूँ 3rd ईयर में एग्जाम होता है कम्युनिटी मेडिसिन का, ना 1st ईयर में होता है ना 2nd ईयर में होता है। ये जो कोर्स चला जा रहा है, जो होता जा रहा है, जो गड्ढे में गिरता जा रहा है, इसको कैसे कवर अप करते हो? हाँ